हाय माय क्यूरियस लर्नर्स। आज स्टार्ट करते हैं एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टू कलरफुल एंड कॉमनली यूज्ड jewels ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. Yes, you correctly guessed it. Similes and metaphors. To begin with, we'll start with similes. Simile एक figure of speech है where we are using it for comparison. कैसा comparison? जहाँ हम दो helping words ले सकते हैं, like और as. Not both of them together, one either. ओके या तो हम like का यूज़ करते हैं, like या हम as का यूज़ करते हैं. हम एग्जाम्पल लेते हैं एक ब्राइड का. यूजुअली एक ब्राइड रेड ड्रेस में होती थी, तो द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड एज अ रेड रोज. सो you can say that the simile is the bride is dressed as a red rose. The bride is a red rose is the metaphor, जहाँ हमने like और as को यूज़ ही नहीं किया, डायरेक्टली हमने उसका कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज अ बोल्ड कंपैरिजन. एक और एग्जाम्पल उठाते हैं. जेक्स स्लेप्ट लाइक अ लॉग. यहाँ पे कंपैरेटिव वर्ड लाइक आ रहा है और जेक्स की स्लीप को हमने इतना साउंड माना ऐसे कि लॉग ऑफ वुड. सो इट इज अ सिमिली हियर. सिमिलरली वी कैन से सन वॉज अ फर्नेस. द सन गॉड, द स्क्राउचिंग हीट, उसको हमने ऐसे कह दिया जैसे कि कोई फर्नेस है. सो दैट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन वी आर यूजिंग हियर एंड दैट इज कॉल्ड एज अ मेटाफर. आई होप इट इज क्लियर. बट लेट्स टेक some more of examples ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाए. और क्लैरिटी के साथ में मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे कहूँगी कि रीजनिंग ज़रूर करो. रीजनिंग करने से क्या होता है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं एंड देन यू नेवर फॉरगेट देम, एंड व्हेन समबडी आस्क्स यू, यू आर मोर कॉन्फिडेंट टू आंसर देम बैक फॉर दैट. जेनिफर प्लेड द वायलिन लाइक एन एक्सपर्ट. अब व्हाट इज इट, यू टेल मी. Come on, quickly write it in the comment section and let me know. Yes, you are correct. It is a simile. Why? Because the skill of Jennifer playing the violin is just in an expert manner. So like use hua hai and it is a simile. Let's take another example. My student is an angel. The teacher is comparing the student to an angel, but she isn't using any comparative word like or as. So क्या होगा ये? Quickly in the comment section. Yes, it's a metaphor. Why? Because I haven't used any like or as here, but the comparison is still made. My teacher told me that ideas have wings. Now, ideas are wings means they give you an inspiration. And again, no comparative word. So yes, you are absolutely correct. You are with a metaphor. Now you see when you are reasoning out how promptly you are able to understand. और जब हमारे को कोई चीज़ understand होती है तो उसको समझ कर करने में हमारा interest enhance होता है, and for sure it becomes easier for us. He is quick as a cat. Now the promptness is compared to a cat here. As word का usage है, so it is a simile. Now children, check out for some more of sentences that are given to you to differentiate between a simile and a metaphor. And do not forget to share your answers and doubts if you have any in the comment section. And yes, do not forget to like and subscribe for more videos.